Good morning, students. Today we will study our revision part of passage. So you know passage. I tell you about passage. So there are two types of passage: seen passage and unseen passage. So today we will discuss its unseen passage. So what is seen passage? The seen passage which you have seen, which is your book, which is related from your book. And what is unseen passage, which is not related to your book and which you have not seen. So let's discuss. First is, this is unseen passage. So we will read. So first we have to read full paragraph, and after that, after reading it, we have to give all the questions answer. So these are passages. So once upon a time there was a great kingdom named महापाल. एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा किंगडम था जिसका नाम था महापाल. So what was the name of the kingdom? Mahapal. It was a very fertile kingdom and people of the kingdom were happy. ये बहुत ही fertile means यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत ही उपजाऊ थी, which is good for growing crops. So it was very fertile kingdom and people of the kingdom, और यहाँ के जो kingdom के जो लोग थे were happy, बहुत ही खुश थे. महापाल वॉज रूल्ड बाय किंग महेंद्र. महापाल में एक राजा रूल करता था जिसका नेम था महेंद्र. हु वॉज अ नोबल किंग. वो बहुत ही नोबल, बहुत ही अच्छा राजा था. ही टुक केयर ऑफ द पीपल लाइक हिज ओन चिल्ड्रन. ही टुक केयर, वो बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखता था अपने लोगों का. लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों के समान. बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट द किंग डिडंट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन. बट द पीपल ऑफ महापाल, लेकिन महापाल के जो लोग थे वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे. अबाउट द फैक्ट, ये सच जानकर कि जो किंग है डिडंट हैव अ चाइल्ड, कि राजा की कोई संतान नहीं थी अपनी खुद की. ऑफ हिज ओन मीन्स अपनी खुद की. वन डे द मिनिस्टर्स केम टू द किंग विद अ रिक्वेस्ट. एक दिन मिनिस्टर राजा के पास आए विद अ रिक्वेस्ट मीन्स एक प्रार्थना करते हुए. So dear student, we have read this passage. Now we will give some answers of these questions. So these are some passages which we have to give the answers. What was the name of the kingdom? Kingdom का क्या name था? तो very simple. The name of the kingdom was Mahapal. Next is our question number 2. There is also answers you have to do. Why were the people of Mahapal not happy? महापाल के जो लोग थे वो खुश क्यों नहीं थे? The people were not happy because the king didn't have a child of his own. लोग खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि राजा के कोई अपनी संतान नहीं थी. So dear student, this is our first passage which is unseen, and this is very simple passage. We have to read passage and after that we have to give some answers of these passage. That is very simple. Next is second question of this passage. Write one word for the following. So what is our one word? A person who rules a kingdom. एक person जो kingdom पे rule करता है, that is king. Who is he? King. Find out the word from the passage which is opposite to sad. जो sad का opposite है. Opposite of sad is happy, and this is also from our passage. So next students, we will study our second passage which is also very important. So the passage are really very easy, but we have to only read the passage carefully and after that we have to give answers. So passage number 2. One day when the woodcutter was returning from the forest with a load of wood on his head, he found a big wooden box. एक दिन जब वुड कटर लौट रहा था, लकड़हारा जब लौट रहा था जंगल से विद अ लोड ऑफ वुड, यानी लकड़ी का जो वो लोड था उसको लेकर ऑन हिज हेड, अपने सिर पर रखते हुए, ही फाउंड अ बिग वुडन बॉक्स. उसने एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का बॉक्स पाया. इट मीन्स व्हेन द वुड कटर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, जब वुड कटर फॉरेस्ट से जंगल से रिटर्न कर रहा था, लौट रहा था, विद अ लॉड ऑफ वुड ऑन हिज हेड, तो उसके हेड पे बहुत सारा क्या था? लोड, वुड का, लकड़ी का गट्ठा. ही फाउंड अ बिग वुडन बॉक्स. उसने एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स पाया. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. ये भरा हुआ किससे था? गोल्ड के कॉइन से, सोने के सिक्कों से. देयर वॉज सो मच मनी इन इट. इसमें बहुत सारे पैसे थे. व्हाट डिड ही फाइंड? ही फाउंड अ
wooden box in which there were so many gold coins. सोने के सिक्के से. There was so much of money in it that he could live in comfort without working for the rest of his life. उसमें इतने पैसे थे कि बहुत ही कंफर्ट लाइफ में, बहुत ही आराम की जिंदगी जी सकता था विदाउट वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. अपने पूरे लाइफ में बिना काम करे वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सकता था. He was overjoyed to see the money. वो बहुत ही खुश हुआ to see the money, मानी पैसे को देखकर. Overjoyed मानी बहुत ही खुश हुआ. So our question number 1 is, what did the woodcutter find? You know, very simple. Our answer is here. The woodcutter found a big wooden box. He found a big wooden box. How much money was there in the box? There is also answers. So how much money was there in the box? में कितने पैसे थे? So our answer is, there was so much money in that the woodcutter could live in comfort without working for the rest of his life. वहाँ पे उसमें इतने पैसे थे बॉक्स में कि वुड कटर बिना अपने आराम की लाइफ जी सकता था बिना काम किए. नेक्स्ट इज, सो राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. A person who cuts wood in the forest. What is the name of a person who cuts wood in the forest? जो पर्सन जंगलों में लकड़ी काटता है उसे क्या कहते हैं? तो our answer is wood cutter. Find the word from the passage which is opposite to small. पैसेज में से एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो कि स्मॉल का अपोजिट होता है. तो वेरी सिंपल, बिग. So our opposite is big. So these are some passage and you have to do in your notebook, and passage are really very easy. You have to only read very carefully and after that you have to give answers from this passage. उस passage में से ही आपको answers को छांटना होता है, but हमें passage को पूरा ही read करना पड़ता है. पहले passage को हम read करेंगे अच्छी तरह से, after that हम question को अच्छी तरह से read करेंगे, वो हमें question क्या पूछ रहा है, and after that we have to give answers. So what are, I again tell you, there are two passages, each unseen passage and seen passage. Seen passage which is related from your book, and unseen passage which is not related from your book and which you have not seen, जिसको आपने नहीं देखा है. And what is seen passage? Which you have seen, जिसे आपने देखा है. So this is our passage number 1. You can see the answers. And next is our passage number, these are MCQs also, and this is our passage number 2. I have also read you. So I think that is very easy and you have to do in your notebook also. So I know you have understood what are passages and what are the kinds of passages and how to solve the passage easily. So next is how to solve. Thank you. Have a nice day. That is very simple for you.